Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you're doing well. So today we are going to continue our adverb part two words. कल हमने तकरीबन इसमें rule number 7 complete किया था. So today we are going to learn more about the uses of adverb. Okay. 7th rule कल cover हो गया था. It is very simple one. अब 8th पे आते हैं. So the 8th rule is saying, supposing and if cannot be used together in the same sentence, supposing if he fails, what will he do? ठीक है. Supposing and if एक sentence के अंदर use नहीं होंगे, उसका ये sentence यहाँ पे लिखा हुआ है. So this sentence is not possible. In notes के अंदर ऐसा है कि sometimes we are given the wrong sentences, somewhere we are given the corrections. So we need to identify them by ourselves. And then we have endure, suggest, suffering, usually in silence, and tolerate means to allow it with some degree of approval. Example, he endured the pain without complaint. He will not tolerate laziness. यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है endure, जो एक अनकॉमन वर्ड है, बहुत यूनिक वर्ड है, खास करके बहुत टफ सिचुएशन में यूज किया जाता है. इंडोर के हवाले से आई कैन एक्सप्लेन इट कि बड़ी बड़ी दुनिया की जो स्पीचेस हैं, ओरेटरीज हैं, उसके अंदर इंडोर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. जैसे अमेरिका के अंदर जो मुआशी बदहाली आई थी, तकरीबन 2 से 3 डेकेड्स तक वो कायम रही, उस दौरान जो कौम ने सब्र किया था, मुश्किलातें देखी थी, उस वर्ड को इंड्योर से कंपेयर किया जाता है. द अमेरिकन्स इंड्योर टू डेवलप अ न्यू अमेरिका. ऐसा एग्जांपल ले लें कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में पर्सन हैज गिवन ऑल द थिंग्स एंड सर्व द पर्पस, और सालों बाद जब वो भूख और बदहाली से लड़ता लड़ता उसने स्ट्रगल की, देन ही और शी अचीव्स द थिंग. ठीक है, तो इस सिचुएशन में इंड्योर वर्ड यूज होता है. बाकी इसमें लिखा हुआ है ही इंड्योर्ड द पेन विदाउट कंप्लेंट, ही विल नॉट टॉलरेट द लेज़ीनेस. तो इंड्योर वर्ड जहां पे यूज होता है सख्त और शिद्दत वाली मेहनत, सब्र से, इस्तकामत से अपना काम करते रहना. ओके. अवॉइड द यूज ऑफ हैड विद ought. You had not ought to do it. Had और ought आपस में इस्तेमाल नहीं हो सकते. इसका सेंटेंस है you ought not to do it. ओके. आगे है is used when one compares things or persons of equal or about equal size or quality. So is used when one compares things or persons which are unequal. Example, he weighs as much as his father. He does not weigh so much as his father. इसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ. It is a very lengthy definition. As is used when one compares things. As वहां पे यूज होता है जब कोई भी चीजों को कंपेयर करे या लोगों को कंपेयर करे या इक्वल रखे और उनकी एक इक्वल साइज हो या फिर इक्वल क्वालिटी हो. तो वहां पे when one compares things or persons which are equal. Example, he weighs as much as his father. He does not weigh so much as his father. ठीक है, sentences are there. So it's again समझ आ गया. जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे ये इन अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे. Okay, avoid using the double comparative and double superlative. The weather is more hotter than it was yesterday. The weather is hotter than it was yesterday. This pen is the most costliest in the store. This pen is the costliest in the store. आगे है cent, percent, and word by word are wrong uses. The real terms are 100% and word for word. इनकी जो proper use यहाँ पे दे रहा है कि cent, percent आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. आपको proper use करने 100%. Separate word आप use नहीं कर सकते. And word for word है, word by word नहीं, word for word. Okay. वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन का एक टाइप भी है जिसमें वी नीड टू डू ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड. जैसे जो होली बुक्स हैं या फिर जो ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम हैं, जो लाइक जिनकी फॉर्मेशन पोइट्री की तरह होती है, या फिर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो वी कॉल अ मेथड, इसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होती है. वर्ड बाय वर्ड इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग कॉनोटेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. When two comparatives are used in a sentence for proportion, the is used before both of them. और इनके examples हैं the higher we go, the cooler it is. सही है. जब दो proportion को हम compare करें sentences में, तो जो second one है
वहां पे हम द लगाते हैं. It is common sentence. The higher we go, the cooler it is. It's a universal truth. जैसे भी हम sea level की जो ज्यादा हाइट होगी कंपेरेटिवली विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर पार्ट्स ऑफ द लैंड, तो उसमें टेम्परेचर डाउन होता जाएगा. 15 है डू द नीडफुल इज इनकरेक्ट, राइट डू व्हाट इज नेसेसरी. आगे है नेवर से फैमिली मेंबर्स से मेंबर्स ऑफ द फैमिली. एग्जाम्पल, हिज फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू द इस्लामाबाद. The members of his family are gone to the Islamabad. The correction is given. 17 है else is always followed by but and never by then. It is nothing else but your pride which makes you such a thing. Else का यूज यहाँ पे बता दिया गया है. और आगे इस तरीके की जो वर्ड्स हैं उनकी यूजेस, प्रॉपर यूजेस बताई गई है, जैसे हम कहीं पे मिस्टेक ना करें. चलें सारे कवर कर लेते हैं आज के इस वीडियो में. All of is used in the conversation, not in the standard written English. All of word को हमें use नहीं करना in writing. She gave all of her antiques to the museum. She gave all her antiques to the museum. This is correct one. 19 है talking terms is wrong. You use speaking terms. He is not on talking terms with his brother. He is not on the speaking terms with his brother. Okay, talking is not a proper word, so we need to use speaking. 20th है verbs like resemble, recommend, comprise, order, accompany, read, join, shirk, attack, and emphasize, discuss, fear, succeed, resist, request, assist, benefit, afford, etc. are not followed by any preposition. When used in active voice, he emphasized on the need for the discipline. अब ये जो सारे words हैं जब active voice में use होंगे, so they are not followed by the preposition. He emphasized the need for discipline. She will accompany with you to the Multan. She will accompany you to Multan. अब यहाँ पे आपने देखा कि जो फर्स्ट सेंटेंस है he emphasized on the need for the discipline, ऐसे यूज नहीं होगा, but its correct version is he emphasized the need for the discipline. She will accompany with you to Multan. She will accompany you to Multan. The second sentence is correct. इस तरीके से we need to see through the minor errors we have been making. English is very complex in certain cases. आगे है the phrase types of, sort of, and kind of do not follow a or n. What kind of a friend you are, यहाँ पे a use नहीं होगा. What kind of a friend are you? आगे है a full hour number follows o'clock, but in fraction it does not follow. He left this place by 10:40 o'clock. He left this place by 10:40. जब कोई भी hour complete हो like 8 o'clock 9 o'clock, लेकिन अगर इसके साथ कोई fraction हो like we need to 8 more minutes, तो वहां पे o'clock word use करने की जरूरत नहीं है. 10:30 10:35 like that. Again, yet means up to the present time something that has not happened. His brothers are not married even yet. I hope the end is not yet. It still means that the situation, the state, or an action which began at an earlier time has continued right up to the present. I still do not understand. यहाँ पे है yet means up to the present time something that has not happened. Yet word जहाँ पे भी हम use करते हैं वहां पे कि अभी तक ये चीज नहीं हुई. His brothers are not married even yet. I hope the end is not yet. ठीक है कि इस बात की अब एंड नहीं हुई. Still they are trying to get married, या रिश्ता नहीं मिल रहा, या फिर कुछ और मसला है. It still means that the situation, state, or action which began at the earlier time has continued. ठीक है, तो इस तरीके से the sentence is very simple now. So I still do not understand. I think if I share the notes, you can means learn these things. और इसमें अब वर्ड क्लैरिफिकेशन दी गई है. बाकी जो एडवर्ब्स के रूल हैं वो तकरीबन हमने सारे कवर कर लिए हैं. एडवर्ब्स के अंदर सबसे जो बुनियादी बात होती है वो होती है पार्सिंग, और आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स करनी होती है. अगर वो आप आसानी से कर गए तो फिर उनको यूज करना कोई मसला नहीं है. लाइक उनकी प्लेसमेंट, कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है, और जो मीनिंग का बैलेंस करना होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर,
वहां पे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स का बड़ा रोल है। जैसे किसी भी एक्शन को अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा स्ट्रेस देना है तो वी नीड टू पुट फोकस ऑन द एडवर्ब्स वी यूज, और अगर सब्जेक्ट को या डोर ऑफ एन एक्शन को ज्यादा एम्फसाइज करना है, कम करना है, इंटेंसिटी बयान करनी है, क्वालिटी बयान करनी है, तो वहां पे एडजेक्टिव यूज करना पड़ता है। ठीक है, इंटेंसिटी डेफिनेटली विल कम अंडर द एडवर्ब। आई विल शेयर दीज नोट्स इन द लास्ट। जो जो उसमें वर्ड यूज है उसमें भले आप आसानी से जस्ट गो थ्रू इट और उसके बाद आप समझ जाएंगे। ओके, चलें, ये सिंपल चीजें हैं। आई विल शेयर द नोट्स। आगे चलते हैं। एरर करेक्शन, कॉमन करेक्शन कौन सी होती है उससे थोड़ा हम गो थ्रू हो जाएं। ओके, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स। आई बॉट 2 डजन एप्पल्स। डजन यहाँ पे यूज नहीं होगा। माई सीजर इज ब्लंट। माई सीजर्स आर ब्लंट। The kettles are grazing. The kettle are grazing. I want 2 braids. I want 2 loaves of bread. The sceneries of Kashmir are very beautiful. The scenery of Kashmir is very beautiful. ये सेंटेंस बहुत बार PMS and FPSC के टेस्ट में आ चुका है। His hairs are grey. His hair are grey. His hair is grey. I think यहाँ पे ये मिस्टेक है, hair are grey पड़ेगा। His hair is grey. I do not think so. चलें, we'll confirm it. He has 5 grey hair in his beard. He has 5 grey hairs in his beard. अच्छा, यहाँ पे कलेक्टिविज्म को छोड़ के इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन हम दी है, तभी we are using that word. He ran a 4 miles race. He ran a 4 mile race. Okay. 4 miles नहीं होगा, 4 mile होगा। 4 hour journey होगा, 4 hours journey नहीं होगा। ठीक है। Summer vacations are very near. Summer vacation is near. अगर समर वेकेशंस की हम बात करें तो इट मींस कि एक नहीं, एक से ज्यादा वेकेशंस हैं। कॉमनली वी हैव ओनली वन समर वेकेशन, जून एंड जुलाई, जो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को होती है। आई लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज। सिंगल वर्ड स्टडी यूज नहीं होता, स्टडीज होता है। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मोर्टार। This house is made of brick and mortar. Entry to the cinema will be by tickets. Entry to the cinema will be by ticket. Tickets नहीं, ticket के साथ entry होगी। The first inning is over. Innings word होगा again. The first innings is over. He wants 2 pairs of shoes. He wants 2 pair of shoes. It's correct one. 16 है, he showered many abuses on me. He showered much abuses on me. He took troubles to do his work. He took pains over his work. Okay. So this was revision to the adverbs और उसके जो use थे, बाकी उसके साथ जो words use होते हैं उसका revision था। और इसके अलावा बाकी जो parts of speech हैं bit by bit we will complete that. So this was the second part of adverbs and I hope you have got it. If you have any question regarding its different types, its uses, you may ask. So इससे अब हम आगे चलेंगे parts of speech में bit by bit. So we'll complete that.